चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हाउ योर पेरेंट अर्न मनी? बाय डूइंग द सम एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, सबका यही आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हाउ यू कम टू स्कूल? बाय द एनी कन्वीनियंस एज यू। Third one, what is your activity after school? Are you differentiate the economic and non-economic activity? And what is the objective of business? तो इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे इस टॉपिक में। और आज हम क्या सीखेंगे? Appreciate the development of trade and commerce in historical past, understand the role of indigenous banking system in trade and commerce, and explain the concept of objective of the business. Discuss type of industries, explain the activity related to the commerce. तो ये सारे टॉपिक आज हम जानेंगे। तो हर एक व्यक्ति जो है अपने नीड को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करता है, और उस एक्टिविटी के आधार पे ही उसको कुछ ना कुछ अर्न करना होता है। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी टू सेटिस्फाई देयर नीड। दिस एक्टिविटी कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economic activities are those activities keeping yourself engaged to earn something in return in economic activity. Earn something, earning something, आप कुछ ना कुछ अर्न करते हैं। Like a doctor, teachers, driver, sweeper or clerk are the engaged in economic activity. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि आती है सेटिस्फाई योर वांट, नीड एंड वांट। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि नीड इज योर बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान इज योर बेसिक नीड, वांट मीन्स योर डिजायर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्स्टली शुड बी फुलफिल आवर नीड, देन वी कैन सेटिस्फाइड आवर वांट। तो बोथ एक्टिविटीज need and want also completed by the economic activity. Mean to earn livelihood, concern with production. Economic activity is related with the production, exchange and distribution of goods and services. Economic activity determine the standard of living of individual, determine the social and economic status of citizens, and determine the level of economic growth of a nation. To earning money should be involved in this activity. Non-economic activities are those activities which do not have any economic motive, have not economic motive, and are performed with the feeling of love, sympathy, humanity and patriotism, are known as a economic activity, like a playing, dancing, giving, donation, etc. So these are the non-economic activity. Further divided into three categories. Economic activities may be classified into three categories. Type first is business, profession and employment. The business refer to that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit through the production. How to earn the profit? Through the production, purchase and sales of goods and services. For example, fishing, mining, farming, manufacturing. These are the business activity.
The term business means being busy. However, in a specific sense, business refers to occupation in which people regularly engage themselves with a view to earn profit. कहीं ना कहीं वो इंगेज कर होते हैं वो डेली, जहाँ पे उनको प्रॉफिट अर्न होता है. तो कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे इंगेजमेंट हो वो उनका रेगुलर बेसिस पे और इस पर्पज से कि वो प्रॉफिट अर्न करें. In earlier time, business will be very simple affair. It was only a means to carrying a living and acquiring wealth. Today, the range of business activities has widened to include not just commerce and industry, but a network of the services such as banking, insurance, distribution, transportation. Everything are related with the activities, economic activity. So, business involve production or purchase and sales, transfer or exchange of goods and services to satisfy the need of people, be them to earn profit. बस अगर आपका अर्न प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो फिर वो बिजनेस नहीं होगा. द पर्सन हु आर एंगेज इन द बिजनेस आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. प्रोफेशन इज प्रोफेशन रेफर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन which is conducted by a person having some special knowledge and skills and which they use impartially to serve the different section of the society. These activities are subject to guideline for code of conduct laid down by the professional bodies. For example, lawyer are professional engaged in the legal profession. Doctor is professional engaged in the medical profession. To profession refer the activity which require the specific knowledge and skill to do applied by individual in his work to earn a living. Doctor, lawyer, hairdressers and nurses. Employment refer to that economic activity in which an individual work regularly for another person and gets remunerated in return. For examples, working in a factory, working in a government office, working in bank, working in insurance company, teacher, working in Kendriya Vidyalaya. That is the employment. Then employment refer to an activity in which a person works regularly for another for a fixed remuneration, like a typist, a doctor working in hospital. डॉक्टर अगर अपना बिजनेस करेगा तो उसको प्रोफेशन बोलेंगे. अगर वो कहीं किसी हॉस्पिटल में वो अपना जॉब करता है तो वो एक एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा. तो प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंसेज है इसको समझ लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो फर्स्ट बेसिस फॉर द मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हाउ टू सेट अप द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस में बी स्टेबलाइज व्हेन द एंटरप्रेन्योर डिसाइड. एक व्यक्ति जब भी अपना बिजनेस डिसाइड करना चाहे, स्टार्ट करना चाहे, वो कर सकता है. ये उसका डिसीजन होगा, कहीं कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं. प्रोफेशन इज स्टार्टेड आफ्टर गेटिंग दैट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. देखिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर का प्रोफेशन है, और वो कब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अपने सर्विसेज, जब उसको एक सर्टिफिकेट प्रैक्टिस की मिल जाए. जब तक रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं होगा वो दे कैन नॉट स्टार्ट देयर प्रैक्टिस फ्रॉम द प्रोफेशनल बॉडी. एम्प्लॉयमेंट बिगन, हमें जॉब कब मिलेगी, जब हमारा एक अपॉइंटमेंट हो जाएगा उस जॉब में, तब हम अपना एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट बिगन आफ्टर गेटिंग द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर. नेक्स्ट बेसिस ऑफ द डिफरेंसेज इज नेचर ऑफ वर्क. बिजनेस इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Profession involve rendering personalized service to expert nature. Professional expert services होती है ये. Employment include performing the work as the service contract. Third is one qualification. On the basis of qualification for starting a business, no qualification required. Profession is required the professional degree in the specific field required for the profession,
and employee need that qualification and training as prescribed by the employer. Net difference is return and reward. Business get return in the form of profit. Professions charge fees from their services. Employees get salary or wages return into their work. Net difference is the capital investment. For starting a business, capital should be required as per their size and nature. Only initial investment is required for in the case of profession. एक डॉक्टर को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना क्लिनिक चलाने के लिए बस उसको थोड़े से सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है. एंड नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट. कहीं पे जॉब पानी है आपको, वहाँ पे कुछ कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. You can select. Risk in the business, profit are the uncertain and irregular. So risk is the present. In the case of business, profession face less risk as the fee charged in generally regular and certain. In the case of employment, no risk as they get a fixed and regular pay. Business require two assistants and professional experts like lawyers and services of the employee like sales manager. Similarly, professional require services for assistant and business houses to utilize their services. The person seeking employment require business houses and professional firm to utilize their services. Next one, आइए समझते हैं कि क्या डिफिनेशन है बिजनेस की. तो बिजनेस इज रिलेटेड टूवर्ड प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय लुइस एच हेने. नेक्स्ट इज बिजनेस में बी क्लासिफाइड एज एन एक्टिविटी इन व्हिच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स आर सर्विसेज for mutual gains and benefit. Peterson and Paulman. तो दिस इज डिफिनेशन. मेजर फंक्शन परफॉर्म बाय द बिजनेस इंटरप्राइजेज. क्या क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी इंटरप्राइजेज में, आइए समझते हैं. फाइनेंसिंग. तो बेसिक टर्म होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ये चार मेन इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं. तो फर्स्ट है फाइनेंसिंग इन कंसर्न विद मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड फॉर रनिंग द बिजनेस इंटरप्राइजेज. प्रोडक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स आर मोस्ट कंज्यूमेबल आइटम आर यूजफुल आइटम फॉर जनरेशन द सर्विसेज. मार्केटिंग रेफर टू ऑल दीज एक्टिविटी व्हिच फैसिलिटेट exchange of goods and services from producer to the people who need them at a place they want at a time and required and enterprises they are prepared to pay. Human resources management, main aim for this department is providing working people who are the necessary skills to perform various tasks in the enterprises. Now we are discussing about the nature or characteristics of the feature of business. So business is an economic activity. Business is concerned to be an economic activity because it is undertaking with the object to earning money. Business involves sales, exchange, purchase of goods and services for mutual profit through a satisfaction of human want. Next, business is related with the production requirement of goods and services. Before goods are offered to people for consumption, these must be either produced or procured by business enterprises. Thus, every business enterprise either manufactures the goods it deals in or acquires them from producer to be further sold to consumers or users. The essential characteristics of business is that there should be sale or exchange of goods or services between the seller and the buyers. Sales, purchase of the goods and services. So in the business, sales, purchase goods and services transaction is the requirement. Dealing the goods and services, it should be on the regular basis.
One single transaction or sales or purchase therefore does not constitute business. For examples, if a person sells his or her domestic for even earning a profit, it will not be considered as a business activity. But if she sells car regularly either through a shop or from his residence, it will be regarding an business activity. Profit earning of the main purpose of the business is to earn income by way of profit. No business can survive for long without profit. That is why businessmen make all possible effort to maximize profit by increasing the volume of sale or reducing the cost. Next feature of the business is uncertainty of return. That means return is not fixed. Uncertainty of return refers to that lack of knowledge relating the amount of money that the business is going to earn in a given period. Every business investment money to run its activities with the objective of earning profit, but it is not certain as what amount of profit will be earned. अब बिजनेस में फ़ायदा होगा या नहीं, फ़ायदा होगा तो कितना होगा, इट कैन नॉट बी फिक्स. तो वी कैन से दैट द रिटर्न इज अनसर्टन. एलिमेंट ऑफ रिस्क. तो रिस्क इज द अनसर्टेनली एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर ऑफ लॉस. नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद द रिस्क. Risk is the caused by some unfavorable and undesirable event. Risks are the related with factors like change in customer taste and fashion, change in method of production, strike or lockout at workplace, increased competition in the market, fire, threats, etc. तो डिफरेंट टाइप ऑफ द रिस्क है. रिस्क का आगे और टॉपिक है. तो रिस्क हरदम बना होता है कि आगे फ़ायदा होगा या नहीं, कहीं हमारा सामान जब तक हमारा सेल होगा तब तक टेक्नोलॉजी ना चेंज हो जाए, मेथड का प्रोडक्शन स्ट्राइक ना हो जाए, लॉकडाउन ना हो जाए. तो ये बहुत सारे रिस्क बिजनेस में है. तो ये सारी चीज़ें बिजनेस की जो फीचर्स हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इट इज़ द समराइज. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट इन्वॉल्व गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूड सेल्स, सर्विस, exchange of goods and services. It deals on regular basis, has profit earning motive and involve risk and uncertainty. Now we can classify into two type of the different activity. So business can be classified in the industry and commerce. In this group of the firm doing similar or related business, in the commerce helping in carrying out business. Industry, primary, secondary and tertiary. In the primary sector we can divide it into two, genetic and extractive. Secondary is related with the manufacturing and article, synthetical, processor, assembling and construction. Commerce, trade, auxiliaries to trade, internal trade, wholesale, retailer, import, external. external में दो आ जाएंगे, wholesaler and retailers. external में import, export और interport, ये तीन कैटेगरी आएगी. तो ये सारे हमारे कॉमर्स से रिलेटेड हैं. auxiliaries to trade में basic services are involved like transportation, warehousing, insurance, advertising, banking, finance. तो आज हमने सीखा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉमर्स. तो नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन. State the different type of economic activity. Very simple question. Business, profession and employment. Second question is state examples of nautical industries. Petrol and diesel industry related with the nautical industries. Next question is give the meaning and two examples for economic activity.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश प्रोड्यूस व्हीट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, will it will be business activity? No, as it not a perform for earning profit. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देखिए। हरीश प्रोड्यूस व्हीट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाट will it will be business activity, क्यों, what is the reason? तो रीजन इज इट इज नॉट अर्निंग द प्रॉफिट। ए पर्सन सेल्स हिज ओल्ड कार एट ए प्रॉफिट, कैन बी टर्म ए बिजनेस एक्टिविटी? चलिए चेक करते हैं। नो, बिकॉज बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। ए पर्सन सेलिंग टी एंड कॉफी इन द रेलवे स्टेशन, डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट एट हिज क्लिनिक। और इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हर ओन कंजम्पशन, ए फैक्ट्री ओनर्स प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग फॉर सेल इन द मार्केट। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं, इस पर मार्क करना है आपको, अपनी कॉपी में कर लेंगे। पर्सन्स बिगिंग एट बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन, सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक हेल्प डूइंग हाउस होल्ड costs at the employer's house, services of the housewife doing household work at home। तो चेक करिए कि क्या आपका सही है, और फिर इसके बाद असाइनमेंट आपके लिए है, इसको भी नोट करना है। व्हाट डू यू वांट अंडरस्टैंड बाय मैरीटाइम ट्रेड। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज द बिजनेस कंसीडर्ड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ बिजनेस। व्हाट इज द वेरियस टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो ये डिफरेंट, ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये आप इसको नोट करेंगे और प्रोजेक्ट होगा आपके लिए। अगर आप धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पड़ोस में ही अगर आप निकल पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोजेक्ट कोई करना ज़रूरी नहीं है। जब लॉकडाउन ओपन होगा तभी करना है, और जब आप कभी निकलें तो आप इसको बस जनरल एक ऑब्जर्वेशन करना है। विजिट एनी बिजनेस यूनिट, आपके आसपास में जो है अड़ोस पड़ोस में, तो विजिट एन बिजनेस यूनिट इन योर लोकेलिटी, इंटरेक्ट विद ओनर टू फाइंड आउट द स्टेप इन स्टार्टिंग द बिजनेस, प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन योर विजिट। उनसे पूछना है कि भाई आपने दुकान कैसे खोली, क्या क्या आपने स्टार्टिंग की थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे आपने सेटअप किया, आप उससे सिर्फ बातचीत करेंगे संभव हो तो, नहीं तो जब ओपन होगा तब फिर इसको समझ लेना है, या आप किसी से फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो अगले हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्टिविटी रिलेटेड टू कॉमर्स एंड nature of business risk and their causes and the basic factor to be considered while in the business। ये अभी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसको हम बाद में करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे फ़िलहाल। तो थैंक यू फॉर द